Chanderi, surrounded by dramatic monumental architecture, steeped in history, in heritage, in craftsmanship. This little town is home to the exquisite fabric known as the Chanderi. The town Chanderi is located in the central Indian state of Madhya Pradesh. There are around 3,000 looms here, and the cluster provides employment to more than 18,000 weavers, many of them women. And how exactly is the local economy structured? Well-off traders with access to markets and capital provide designs, yarn and wages to weavers. The artisans produce the fabric in their household units and deliver the finished products to the traders. It is a seamless arrangement that has stood the test of time. But the cluster has been facing threats. The design vocabulary has remained stagnant, as has the product range. As a result, the market expansion has been limited while the population has grown. The result? Idle looms, depressed wages and poverty. Poverty. It seems to be breeding itself. The poor take loans from the informal money lenders at exorbitant rates of interest and are often unable to repay them. The vicious cycle of poverty and indebtedness thus continues. Ram Pyari, who deposited her jewellery with a money lender in order to take a loan, recounts. घर में परेशानी, पति बीमार और देवर भी बीमार और दो लड़की जवान हो गई शादी को, 3 रुपया सैकड़ा तो ब्याज देत और जा पता नहीं है हमने कि कितने तो हमने दे दे, तो हमें ना मूर को पता हुआ ना कछु ब्याज को पता हुआ कि कितने हम दे चुके और कितने हम इनने ले लाए, नहीं दे पास भी दबाते हैं, फिर अपनी उठा उतरा कम वो बेच देते. The demands on women are particularly severe. Apart from contributing to the family income, they have to manage all the household chores, cooking, looking after children, fetching water. The list is endless. Worse, the social system has kept them voiceless, both in the family and in the community at large. How then could this artisan cluster be revitalized within the framework of poverty reduction? This is precisely the program that the UNIDO Cluster Development Program initiated in April 2003. Support for the program was provided by the Department of Rural Industries, Government of Madhya Pradesh. Could the poor weavers not form their own collectives, get orders, produce and sell directly to the market? Surely their margins would be higher, and so would their incomes. Well, this is exactly what UNIDO put forward to the weavers. However, like Abdul Matin, most of them were hesitant. जब यूनिडो आई तो उन लोगों से हम जब मिले तो उन्होंने तरह तरह की हमें बातें बताई कि इस तरीके से आप लोग इकट्ठा हो, इससे ये होगा, इससे आपको लाभ मिलेगा. तो ऐसा लगता था कि मतलब जिस तरीके से पहले के लोग जो सपने दिखा के चले गए, इसी तरह के ये भी अपने सपने दिखा के चले जाएंगे और हमें कहीं ना कहीं कोई नुकसान पहुंचा के चले जाएंगे. तो एक है कि हमें भरोसा नहीं हो पाया था इनके ऊपर. Today, roughly 3 years later, Abdul Matin is the Chief Accounts Manager of Bunkar Vikas Sanstha, or BVS in short. BVS is a collective of 193 weavers. The organization gets orders directly from the market, manages its own production and then distributes wages to its members. In 2006-2007, it is expecting a turnover of around 10 million rupees. 3 साल पहले कभी हमने सपनों में भी ये नहीं सोचा था कि कभी हमारी ऐसी संस्था बनेगी कि हम खुद माने इसको चला रहे होंगे और सामूहिक रूप से निर्णय लेते होंगे. सभी तरीके के निर्णय हमेशा सब एक तरीके से बैठ के सब एक ही जगह निर्णय लेते हैं. Today, this cluster development program has led to the formation of 60 self-help groups or SHGs.
These groups have their own savings and members can take loans for their personal needs. The interest rate is far lower than what the informal moneylender charges. मेरे लिए आश्चर्यजनक बात यह है कि चंदेरी में जितने भी बुनकर हैं ज़्यादातर गरीब तबके के हैं और आज मैं देख रहा हूं कि अधिकांश लोग जो हैं बैंक में आकर खाते खुलवा रहे हैं और अपने ग्रुप के माध्यम से जो है ना बैंक में खाता संचालित कर रहे हैं, जबकि उनको बैंक की बिल्कुल भी इसके पहले नॉलेज नहीं थी कि बैंक में क्या होता है, कैसे आना जाना होता है। Women's empowerment is an important component of the program and many women are members of SHGs as well as BVS. In addition, 180 women participate in Hamari Dunya, an organization that addresses gender-related issues. It also organizes training programs on health, women's empowerment and functional literacy. Bunkar Vikas Sanstha, self-help groups, Hamari Dunya. All these institutions have many members who are among the poorest in Chanderi. However, it must be emphasized that the program started with those who were slightly better off. हम सबसे गरीब आदमी के साथ नहीं शुरू कर पाए, क्योंकि हमारा मानना यह था कि एक बिजनेस एक्टिविटी है और इसे कम से कम कुछ मिनिमम बिजनेस नॉर्म्स पे रहना चाहिए, जैसे रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आपका स्किल लेवल और चीज़ों को आपको समझने की क्षमता। ये तीन चीज़ें कुछ कम गरीब लोगों के बीच में तलाश के और उन लोगों के साथ हमने काम करना शुरू किया, क्योंकि हमारा मानना यह था कि अगर उनकी समझ में ये बात आ जाती है, वो संगठन बना लेते हैं अपना, तो अपने से ज़्यादा गरीब व्यक्ति के प्रति उनकी संवेदनाएं ज़्यादा बेहतर होंगी और वो उन्हें अपने साथ लेके और चल सकेंगे। The big challenge, however, was to involve women. नहीं, उस समय तो ठीक लगा और है तो ये बात आई हमारे सामने कि एक समूह बन रहे हैं और इन्होंने भी बताया, हमारी पत्नी ने, कि भाई समूह बन रहा है उसमें हम जुड़ जाएं। तो अंदर से हमारी नहीं दिल कहा कि मतलब आप जुड़ो। मना इसलिए किया कि ये एक छोटी जगह होने के नाते यहाँ लोग तरह तरह की बातें पैदा कर लेते हैं, इसलिए मना किया। यहाँ पुरुष ही आगे बढ़ते हैं और महिलाओं को नहीं मतलब जो है कितना आगे बढ़ाते हैं जो कि कोई किसी तरह का कोई बात कहे। Building trust was to be the key. The program launched a massive community mobilization drive in order to reach out to the poor and convince them about its intentions. But intentions alone were not enough. There were concrete activities too. Member weavers visited the Urmul Trust in Falodi and Seva in Ahmedabad to see how other weavers' collectives had organized themselves. Meanwhile, they participated in training programs on costing and pricing, designing and dyeing, color forecasting and product diversification. The skeptics also saw how members made their own products and held exhibitions in big cities. Afroz, for instance, went to Pakistan and Nepal in order to participate in exhibitions. These were all significant learning experiences for the members. पहले तो घर से निकलने के लिए आत्मविश्वास मिला कि इतना अपने ऊपर विश्वास आया कि हम बाहर निकलकर कुछ कर सकते हैं। दूसरे जो अपना प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले करने का तरीका मिला कि अपने प्रोडक्ट को कैसे डिस्प्ले किया जाता है और बातचीत कैसे की जाती है, वो सलीका आया कि किस तरीके से बात करना चाहिए। The community's faith in the program increased further once the poorest of the poor began participating. Like Kaliman, they did not have to go to the informal money lenders for loans anymore. मेरी डिलीवरी होने वाली थी, इसलिए मेरे घर में कुछ खाने को नहीं था, काम हाल नहीं हुआ था, इसलिए मैंने 300 रुपये लिए थे। मैं क्या करती, मेरे पास कोई जेवरात भी नहीं है कि मैं जो गिरवी रख के ले आती, वो तो परेशानी थी पूरी। तो समूह था तो ले लिए। All these developments helped to win over the skeptics. पहले तो मेरे को ऐतराज़ था इसका कि कहीं भी जाना, अकेले जाना, दुकेले जाना, तो इसलिए मेरे को ऐतराज़ था। और दूसरे जब उसको देखा, वहाँ का वातावरण वगैरह और सब लोग इकट्ठे बैठे और उनका सब माहौल देखा, तो अब मेरे को कोई मतलब आपत्ति नहीं, ना कोई शंका है, ना कोई बात है। Meanwhile, there were other developments. BVS did not have the capacity to design and market products directly. And this is where Fab India came into the picture.
Fab India is a large retailing enterprise for quality Indian crafts and fabrics. It represents a highly evolved market both in terms of design and quality. BVS was keen that Fab India retail Chanderi fabrics. But what role can a private sector market player have in the growth of artisans? Private sector organizations control access to the market. A weaver can take his goods and put them on a pavement and sell them, but today the format of how you get goods to the market is through organized retail, increasingly through organized retail, and that is increasingly, other than the hearts and all, that's increasingly controlled by private players. Fab India took a close look at the Chanderi cluster and placed an initial order with BVS. The retail outlet provided all the designs. Enthusiastic BVS members started working on their looms. And then the trouble began. सबसे पहले जो हमें कठिनाई आई वो चंदेरी में उतना धागा नहीं था जितना उन्होंने ऑर्डर दिया था। उसके लिए हमने कोयम्बतूर से धागा मंगाया। उसमें 30 से 40 दिन का जो हमें टाइम लगा, उससे हम टाइम पे माल नहीं दे सके। जो तीसरी दिक्कत थी वो ये थी कि यहाँ पे जो डाई अगर चंदेरी में करवाने की सोचते तो वो चंदेरी में डाई नहीं हो सकती थी। डाई तो हो जाती थी मगर कच्चे रंगों की होती थी, तो एक वो बहुत बड़ी हमारे लिए समस्या थी। तो जो पहले जो हमने लॉर्ड फैब इंडिया को दिया वो उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं दे पाए। So, what was Fab India's response? तो फैब इंडिया ने हमारा कपड़ा वापस किया और वापस करने के बाद में उन्होंने ये हमें चेतावनी दी कि आप अगर इस तरह का कपड़ा हमें आप बना कर देंगे तो हम आपके साथ में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। Like any typical market player, BVS had to respond quickly. A dedicated dyeing house was set up and scientific techniques introduced. Also created was a yarn depot in order to ensure that yarn shortages did not ever lead to delays. Moreover, production systems and quality control methods were streamlined. Today, for instance, each of the 20 SHGs involved with BVS has a supervisor who periodically visits members on their looms and oversees production. व्यवस्थापक ये कर्तव्य रहते हैं कि संस्था में जाके कच्चा मटेरियल लाते हैं, वो सदस्यों को दे देते हैं, उन्हों से पक्का माल बनवा के संस्था में ले जाते हैं और संस्था में माल जमा करके मजदूरी लाके सदस्यों को दी जाती है। और व्यवस्थापक का कर्तव्य ये है कि हर लूम पर जाके उसका मतलब लूम चेक करें, अच्छी क्वालिटी से बनवाएं कि यूँ मतलब संस्था को कोई परेशानी नहीं आए। Members also participated in several training programs in order to implement all these changes. For instance, BVS sent its dyers for training to the National Handloom Development Corporation. मेरा मानना ये है कि कोई भी ट्रेनिंग हवा में आयोजित नहीं की जा सकती। इससे पहले भी यहाँ कोई 85 तरह की ट्रेनिंग्स हुई होंगी अलग अलग चीज़ों को लेके, लेकिन जब तक उन्हें आप किसी संदर्भ से नहीं जोड़ते तब तक उस ट्रेनिंग का कोई अर्थ नहीं निकलता है। उदाहरण के लिए देखिए, हमने पाया कि जब फैब इंडिया ने हमारे द्वारा भेजे गए कुछ धागों पे, कपड़ों पे कलर ब्लीड होने की शिकायत हमसे की, तो हम लोगों ने अपने डायर्स को एक ट्रेनिंग के लिए भेजा। उन्होंने ट्रेनिंग पाई, वापस आने के बाद उन्होंने वेट डाइस से धागे रंगना शुरू किए और आज वो बेहतरीन तरह से वो धागे रंग के और फैब इंडिया को वापस पहुंचा रहे और उन्हें हमसे कोई शिकायत नहीं है। There have been several such crises, but BVS has always managed to overcome them. And in this, they have learned valuable lessons from the Network Development Agent, the CEO. The CEO of BVS is a Network Development Agent or an NDA. It is very important to have an able NDA for an artisan organization like BVS in an artisanal cluster. Such an NDA should have the capacity to resolve conflict, create new leaders and strengthen the capacity of artisans organizations in a cluster. Today, systems are far more streamlined. BVS has emerged as a vibrant, self-managed collective and poor members' incomes have risen. पहले सेटन से अच्छा काम संस्था का है। सेटन के तो बुनते तो उधर अच्छा नहीं था, मजदूरी कम पड़ती और मेहनत ज़्यादा होती थी, और अब संस्था का काम कर रहे तो अब अच्छा है, अच्छी मजदूरी भी मिल रही। कितनी मजदूरी, कितना इजाफा हो गया अब? 1200 रुपये महीना। और पहले 800 रुपये महीना थे।
Meanwhile, groups have been addressing other issues related to poverty. Take the locality of Patkuiya, for instance. Water shortage was a big problem here, and women had to spend hours getting water for their daily needs. The neighborhood was also unhealthy because of the absence of an effective garbage disposal system. Group members in the locality, all women, decided to do something. They went collectively to the municipal office and met the authorities. Today, they have better access to water, and a large garbage disposal bin has been placed in the locality. अब जब हम सब भाइयों ने समूह बनाया तो इकट्ठी भए तो हम 10-20 महिलाएं इकट्ठी हो गए उधर गए नगर पालिका में तो उनसे ये बात बोला हमने कि हमें पानी की इतनी परेशानी है तो सभी जनों ने हमें जो बात बोली उन्होंने तो नगर पालिका में जाके वो इतना जब हमारा समूह नहीं बना था तो इतनी हमें अकल भी नहीं हती न जाते भी नहीं हते कोई अकेले अब इतनी बात सभी भाइयों के संग बैठे उठे तो इतना बात सीखा हमने इतनी सुनी है देखा समझा है तो इतने बोलने लगे. Clearly, poverty is not just a lack of income, it is also a lack of a voice. And it is this voice that the marginalized weaving community has started discovering. In August 2005, BASICS, an organization affiliated to the Indian School of Livelihoods Promotion, carried out an impact assessment study of the UNIDO program. The most important finding which came up was the institutions which were created of weavers. That has given them space, which has helped them enhance their income, as well as actually given them the self-esteem also, which they were lacking initially. But this is still fragile, I must say. These institutions which have been created with the weavers need hand-holding for a little more time. 3 years may be a short period, but the learning opportunities have been immense, and it may be worthwhile summarizing them. Benefits of economic growth do not trickle down automatically to the poor. In order to reduce poverty, the poor need to have their own organizations. Such organizations of the poor need to have a network development agent or a CEO who can introduce new management systems, identify leaders, and help resolve conflicts. Poverty reduction programs and artisan clusters need to first start activities with the poor and then move to the poorest. Training is most effective when it is carried out in the context of some business-oriented activity. The poor need not become capable of everything, for instance, marketing. In such cases, they can be helped by linking them with high-end retailers who have better access to markets. And finally, women's empowerment is a very important component of such a program.